Is my voice audible? Hope my voice is audible. Is my screen audible? Visible? Please respond. Okay, thank you. Thank you by the way for joining. Okay, so in today's class, I will basically discuss the last chapter, that is about Fourier analysis or Fourier series. Here we will try to learn how to expand a function in terms of an Fourier series. So the center starting point, I am focusing the book by Erwin Kresge, and that book is already uploaded in the web page, in the link that already I think you are already shared by with the link. So the central starting point of Fourier analysis is Fourier series. They are infinite series designed to represent general periodic function in terms of simple ones, namely cosines and sines. This trigonometric system is orthogonal, allowing the computation of the coefficients of the Fourier series by the use of well-known Euler formulas. Now the application of Fourier series are very important, as they enables engineer and physicists to give solutions of ODEs in connection with forced oscillation and approximation of periodic function, as well as application of Fourier analysis in PDEs. Now Fourier series, what is the beneficiality of Fourier series? The application of Fourier series is in certain sense more universal than the so-called Taylor series in calculus, because many discontinuous periodic functions that come up in applications can be developed in Fourier series, but they do not have specific Taylor series expansion. So I will not go into okay. So Fourier series I will not Sumitra, I will basically discuss Fourier series today. So after discussing 20-25 minutes, I will give you some problems to solve, okay, for nearly 20-25 minutes. Then I will check the problem answer, okay. So today I am basically discussing Fourier series. So I am following the book by Erwin Kresge. So Fourier series are infinite series that represent periodic functions in terms of cosines and sines. And for example, now what is a periodic function? We have already, Sumitra, what is the Laplace transformation of a periodic function with periodicity t? Do you currently remember now? The Fourier series equation? No, Laplace transformation of a periodic function with periodicity t. Just I yesterday discussed 1 by 1 minus e की power minus ts into integration 0 to t e की power minus st ft dt. Yes, sir. So why you are not remembering these small concepts? Okay, so Today I go through Fourier series, division of Fourier series. okay, I will discuss So, Fourier series. So now basically I will discuss we call, so Taylor expansion we know, right? Now our problem is to various function fi fx of period 2 pi in terms of simple function like 1 cos x sin x sin 2x cos 2x cos nx sin nx, this, okay. So what does Fourier series gives? Fourier series actually transforms any series in terms of sine cosine terms. So हमने
कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में दो तरीके की सीरीज देखे, एक तो टेलर सीरीज एंड देन द लॉरेंट सीरीज, and now in Fourier analysis for calculus we will see another series. So the series to be obtained will be a trigonometric series, and we will always write Fourier series is like this: a0 equal to plus n equal to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx. These a1 a2 b1 b2 are all coefficients of the series, and now that each of the term has period 2 pi, and hence the coefficients are such that the series convergence, its sum will be a function of period 2 pi. Always remember this thing. So sum of the coefficients will always be a function of period 2 pi. Now expression like this will frequently occur in Fourier analysis. Now we shall prove that in the case of coefficients of 5 or so called Fourier coefficients, this a0 an bn will be fully Fourier coefficients if we perfectly remember this formula, Euler formula. For Euler formula is, जैसे मैं ऐसे याद रखता था, इसको लिखता था a0/2 करके, ठीक है। यहाँ पे चलो a0 है, तुम कैसे भी याद रख सकते हो। तो अगर a0/2 कर लोगे तो फिर यहाँ पे 2 याद रखने की ज़रूरत नहीं होगा, अदरवाइज a0 में 1/2 पाई आता है, ये याद रखना पड़ेगा। a0 इक्वल टू 1/2 पाई minus pi to pi fx dx, and an is 1 by pi minus pi to pi fx cos nx dx, and bn equal to 1 by pi minus pi to pi fx sin nx. So these are the basic formulae. Now I will not go into the proof that how to determine this. I think hope Harry has already discussed this proof. Now we'll just discuss one problem. So find the Fourier coefficients of the periodic function fx. The formula is fx equal to minus k from minus pi to 0, and k if 0 less than x less than pi. So function of this kind occur extremely useful, occur as external forces acting on mechanical system, electromotive forces in electrical circuits, etc. The value of fx at a single point does not affect the integral, hence we can leave fx undefined at x equals to 0 or x equal to plus minus pi. So now if you calculate, so now this is basically a minus pi to pi. So minus pi to pi, this type of function we call as odd function, and since it is a odd function, it will be a Fourier sine series. इसका जो a0 कोएफिशिएंट होगा वो भी 0 होगा, और इसका जो an कोएफिशिएंट्स होगा that will also be 0. So only it will be can be expressed in a Fourier sine series form. Now what will be the bn? If you calculate bn, you will get the formula for. Sumitra, try to determine the calculate the coefficient of bn, and also all of you those who have joined, please try to determine. जैसे हमने यहाँ पे a0 और an 0 निकाल लिया, try to determine bn. So bn का कॉन्सेप्ट क्या है? 1 by pi minus pi to pi fx into sin nx. सॉल्व करो उसको.
excuse me. Excuse me. Sir, is it pi by 4? No. Tirthankar, why you have not joined the earlier classes? Sir, You, am I audible? yes. Thank you, sir. Please join the classes. You have not joined the last classes. Yes, sir. Actually, I am a student in a college and the schedule is very hectic. That's why I couldn't join the previous Okay, ones. so you watch the video. So you are in which college? Central University of Jharkhand. Okay, Central University of Jharkhand. Yes, sir. You are in math department? No, physics department. Physics department. Okay, okay, okay. I think there is in math there is one guy called P Kalika. Is he faculty there? I do not know. I think I have heard a name like that. I cannot completely recall. Okay. So you are The in your, PK Parida. PK Parida is it? no, not PK Padida. It is PK. P Kalika. I think maybe he's pass out. He was in PhD probably. I do not currently Oh, remember. I do not know these students very clearly actually. Okay, no problem. So you are in undergrad or postgrad student? Yeah, UG, BSc first year. BSc first year. So if you have joined the classes, I think many good concepts of mathematics would have cleared to you. I have discussed Yeah. complex Because this analysis. syllabus is very much matching. I wish I could have joined it actually. So you can watch the videos. The videos are there, and also I have discussed many problems, many interesting problems, and there is many concepts I have discussed like calculus, linear algebra, calculus. Then I discussed about complex analysis. I think the most interesting part was the complex analysis. Also, I have uploaded Alright, the sir, notes. I'll go through the videos. I Yes. have my semester exams in a few weeks, and the syllabus is exactly the same one So you should have as joined. before. So it will be very beneficial Yeah, for you. yes, sir. Okay, That's no true. problem, no problem. Try to solve it. Okay. Yeah, Just that girl who has joined, she's regularly joined with me. So it is. I do not think why people do not take these NPTEL classes seriously, because mostly I think that it is free. But if you have, like, I'm telling generally that if you have like submitted some 20 or 50,000 fees, then people start joining. actually, sir, I have classes during that time on Saturday, and on Sunday only I am free. But the college gives us too many assignments to do. Okay, no problem, no problem. I can Yeah. understand. You kindly please watch the videos, okay? Whenever you Yes, sir. feel Yes, time. sir. Yes, sir. Just skip them and then just follow the material. Yes, sir. Thank you, sir. Because I think Sumitra, in complex analysis we have discussed like very interesting topics, right? Yes, sir. In complex analysis and also in calculus, the problems were quite good, and that is why I decided to follow some standard books, because I think books know much than any teacher. So I am not like making slides and all. और slides में क्या करते हैं लोग ना, slides में लोग बचने की कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा टाइप करना ना पड़े, तो उसमें ना वो जो स्टडी होती है वो थोड़ा, क्या कहते हैं वो, क्या वो लूज हो जाता है. स्लाइड से मैथमेटिक्स होता ही नहीं. मैथमेटिक्स या तो पेन एंड पेपर होता है या अदरवाइज बुक फॉलो करके होता है. हाँ हाँ. And if there is a certain book, if I can follow, that book is already available in the internet. If some resource is there, why should not I use it? Why should I make some slide of my own, right? Even I make slide, I will copy from Right. some book only. जैसे I have followed a book of complex analysis by Professor Ravi P. Agarwal, I think.
It is one of the finest books of complex analysis. Till now, like I am in my PhD 5th year, I have not seen that concise complex analysis book any of that standard, and it will be very beneficial for Indian students. Sumitra, are you trying to solve the problem? Yes, sir. 2k by n pi 1 minus cos n pi. 2k Yes, by yes, n very pi nice. would be Okay, Tirthankar, 1 just see minus it. cos n pi. Very nice. Yes. So because we see that this will be only has no cosine terms, only sine terms will exist. b1 b2 कैसे निकालेंगे? 1 by pi minus pi 2 pi fx sin nx minus pi 0 0 pi पे ब्रेक करो, फिर सीधा इंटीग्रेशन लगा दो. cos nx का मतलब होता है n pi. अब ये तो एक cos माइनस अल्फा और cos अल्फा तो सेम ही चीज़ है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा. ये दोनों का सेम ही वैल्यू आएगा. इट इज़ अ इवन फंक्शन. सो 2 इसको ऐसे लिख सकते थे 0 टू पाई 2 इंटू के साइन एन एक्स. साइन एन एक्स का इंटीग्रेट करोगे तो माइनस कॉस एन एक्स. कॉस का होता है 1 माइनस कॉस एन पाई. सो then the answer will be 1 minus cos n pi is 2 for odd n and 0 for even n, and then you can get b1 equal to 4k by pi, b2 equal to 0, b3 equal to 4k by 3 pi, b4 equal to 0, b5 equal to 4k by 5 pi. Okay, is it clear? So the final term will be 4k by pi sin x plus 1 by 3 sin 3x plus 1 by 5 sin 5x plus and so on. This is an infinite series. You will get an infinite series. Now just you assume you set x equal to pi by 2 here. If you set x equal to pi by 2, you will get 4k by pi 1 minus 3 plus 1 by 5. So you will get a series of alternating signs. Now this kind of series converges. Why? By Leibniz test. Leibniz test क्या कहता है कि if your sequence is a series is a monotonic decreasing sequence, series के जो terms है they form a monotonic sequence and series sign occurs alternate way. So then the 1 minus 1 by 3 plus 1 by 5 minus 1 by 7, this series converges to pi by 4, and this is a famous result obtained by Leibniz in 1673. So this you can see that the sum of the coefficients you get it a pi by 4. So pi by 4 is a irrational number, but a sequence of rational numbers converges to that irrational number. देखो ये आपका पहला टर्म है, ये आपका ओरिजिनल फंक्शन है माइनस पाई टू पाई, ये आपका फंक्शन है. तो आपने पहला टर्म कंसीडर किया, देन यू आर अप्रोक्सीमेटिंग दिस फंक्शन लाइक दिस. नाउ इफ आपने दो सम कंसीडर किया तो देखो इसको ऑसिलेट करके फिर इधर आप जितना टर्म इंक्रीज करते करते जाओगे, यू विल सी दैट यू आर मोर नाइसली यू आर अप्रोक्सीमेटिंग द सॉल्यूशन, द ओरिजिनल फंक्शन. ये तो होगा ही ना, जितना आप टर्म्स को ऐड करोगे उतना आप उस फंक्शन के क्लोज जाओगे. ओके तो ये आप देखना, इसका बस में कुछ बताने का है नहीं. ऑर्थोगोनलिटी ऑफ ट्रागोनोमेट्रिक सिस्टम्स. द ट्रागोनोमेट्रिक सिस्टम 3 इज ऑर्थोगोनल ऑन द इंटरवल माइनस पाई टू पाई, हेंस ऑल्सो इन 0 to 2 pi or any other interval of length 2 pi because of periodicity.
that is the integral of the product of any two function 3 over that interval 0, so that for any integers n and m minus pi to pi cos nx cos mx equal to 0, sin ns sin mx equal to 0 और sin nx cos mx equal to 0 जब भी कुछ भी हो n नॉट इक्वल टू m के लिए होता है, और जब sin cos आता है तो किसी के फॉर एनी वैल्यू ऑफ n m हो जाता है। तो फूरियर सीरीज कब कॉन्वर्ज होगा उसका भी एक रिप्रेजेंटेशन है। आई विल नॉट डिटेल देम ऑल। problem set, are there problems? Okay. Okay, I request both of you to please determine. I do not have the solution, so I will request you to please determine the just give me some time. चलो मैं थोड़ा इसको और डिस्कस कर देता हूँ। जैसे फ्रॉम पीरियड 2 पाई टू एनी पीरियड p इक्वल टू 2l कैसे करेंगे, तो p इक्वल टू 2l करने के लिए क्या करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, उसको हम एक ट्रांसफॉर्मेशन ले लेंगे, ठीक है। तो माइनस एल टू एल में क्या कैसे आएगा देखने में, इसको याद रखो। एफ एक्स विल बी a0 n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a n cos n पाई एल एक्स प्लस बी एन साइन n पाई एल एक्स, जबकि a0 an सेम है, बस पाई की जगह l से रिप्लेस हो गया है। एंड ऑल्सो इन द सीरीज यू रिप्लेस n पाई विथ n पाई बाई l। आई विल नॉट गो इनटू द प्रूफ पार्ट। अच्छा, माइनस टू टू 1 1 2 इक्वल टू 2l। आपको मैं दो प्रॉब्लम देता हूँ, इसको थोड़ा लिख लो प्लीज। राइट डाउन दिस प्रॉब्लम सुमित्रा, एंड इफ बोथ ऑफ यू प्लीज राइट दिस फूरियर सीरीज इन योर कॉपी। इस फूरियर सीरीज को आप कॉपी में लिख लो। सुमित्रा जब लिखना हो जाए मुझे बताना, ठीक है। सॉल्व नहीं करना है, बस लिख लो इस क्वेश्चन को जल्दी से। यस सर। ठीक है, तीर्थंकर आपने लिख लिया? हाँ सर। ओके, अब आपको सॉल्व करना है ये फाइंड द। अच्छा, ये तो सेम ही है ना, आपको बस उधर वो उसको पता है तो आप इसको कर दोगे। चलो कोई बात नहीं। अच्छा सुमित्रा, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना, मैं आके देखूंगा और पूछूंगा आप दोनों से कि क्या मैच हुआ क्या नहीं हुआ, और फिर आप करना। ये एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स के लिए निकालो फूरियर सीरीज, इसके माइनस पाई टू पाई है, ठीक है। और एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक माइनस पाई टू एक्स जीरो एंड एफ एक्स इक्वल टू पाई माइनस एक्स फॉर जीरो लेस देन एक्स लेस देन पाई। तो ये दोनों के लिए पहले निकालो, फिर वो वाले प्रॉब्लम के लिए निकालना, ठीक है। सुमित्रा कितना टाइम लगेगा ये तीन प्रॉब्लम करने के लिए?
15 मिनट. Sir, number 6 and number 9. Yes, number 6 and number 9, and also the problem that you have written right now. बताओ. 15 से 20 मिनट लगेगा ना. Yes, sir. Okay, then I am going for having some tea. Okay, Okay, sir. just solve them. Yes, sir. 0 less than x less than x. आप लोग चाय वगैरह पीते हो? Yes, sir. बढ़िया. मेरे को बिना चाय पीने पिए मेरा दिमाग चलता नहीं है. आप दोनों इसको सॉल्व करो. अगर गूगल मीट ऑफ हो गया तो 15-20 मिनट बाद फिर से ज्वाइन हो जाना, ठीक है? आज वैसे भी लास्ट क्लास है, तो आई एम नॉट गिविंग टू मच प्रेशर इन टूडे. चलो मैं चाय पी के आता हूँ. हाँ सुमित्रा, जा रहा हूँ. हाँ मैं 15 मिनट में आ जाऊंगा, ठीक है? Yes, sir.
Okay, Sumitra, the problem is solved. Both the problems are solved. Hello? Hello? Yes, sir. Tirthankar, are you with me? Yes, sir. So what is the answer for question number 6? बताओ, कोई भी बताओ. सर नंबर 6 का पाई बाई 2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 2 बाई n स्क्वायर पाई अच्छा, माइनस 1 टू द पावर n इसका क्या माइनस 1 आंसर इधर cos दिया n। जाता है? चलो मॉड एक्स का देखता हूँ. फूरियर सीरीज ऑफ मॉड एक्स. ऐसा आता है क्या सुमित्रा? पाई बाई 2 माइनस 4 बाई पाई कॉस एक्स प्लस कॉस 3x बाई 3 स्क्वायर प्लस कॉस 5x बाई 5 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन. सर इवन और n इक्वल टू 1 2 3 4 डालने से ऐसा आएगा। मैं सम में रखे। अच्छा, मतलब 1 3 पे आएगा, उस पे नहीं आएगा, मतलब 2 4 पे नहीं आएगा ना. इवन इवन में 0 आएगा। इवन में 0 आएगा, यस. एंड प्राइम में रहेगा, सॉरी ऑड में रहेगा ना. यस सर। तो ये आंसर आया पाई बाई 2 माइनस 4 बाई पाई कॉस एक्स प्लस कॉस 3x बाई 3 स्क्वायर प्लस कॉस 5x बाई 5 स्क्वायर. यस सर। ओके, और अगले वाले का क्या आया? और 9 का A00 आया। अच्छा, इसका तो मेरे पास पता नहीं आंसर है कि नहीं. मैंने तो बुक ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तुम थोड़ा देख लेना इसका क्या आंसर आ रहा है. यस सर। तुमने एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर. क्रेजी यस. सर ये क्रेजी बुक का है क्या? हाँ, क्रेजिक का बुक का ही है. अच्छा, जैसे अगर 0 to 2 पाई हो तो कैसे करोगे पता है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0 to x < 2 पाई. इसको कैसे करोगे? 0 to 2 पाई। हाँ, 0 to 2 पाई. इसको इसको करो. एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पाई 2 पाई एंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0 <x <2 पाई. क्वेश्चन नंबर 14 का हेल्प लेके क्वेश्चन नंबर 15 करना है. ठीक है, यस सर। पता है क्या क्या होगा? इस पे क्या ट्रिक करना होगा, समझ में आ रहा है कुछ? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर तुमने निकाल लिया, ठीक है. तो इसका लेकिन देखो इंटरवल है 0 से 2 पाई तक, तो हम एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे. कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन? हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे एक्स इक्वल टू वाई प्लस पाई. तो वाई का डोमेन आ जाएगा माइनस पाई से पाई, और फिर एक्स को यहां से रिप्लेस कर दो जी वाई इक्वल टू वाई प्लस पाई होल स्क्वायर, और फिर उसका निकाल लो माइनस पाई टू पाई रेंज में. समझे? चलो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का निकालो.
हो गया ये एक्स स्क्वायर का। plus summation n equal to 1 to infinity an for pi square cos nx minus 4 pi by nx. Yes, sir. क्या आया आंसर? A0 series 8 pi square by 3 plus summation n equal to 1 to infinity 4 by n square cos nx minus 4 pi by n sin nx. लिखता हूँ। A0 है 8 pi square by 3. ये आया। सॉरी by 2 नहीं के 4 pi square by 3. तो मैं 0 to 2 pi की और माइनस पाई टू पाई, वो नहीं की 0 to 2 pi. 0 to 2 माइनस पाई से पाई के बन के 0 to 2 पाई कैसे कर लिया तुमने? जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन बताया था वो उसको यूज करके मैंने जो ट्रांसफॉर्मेशन बताया था उसको यूज किया ना तुमने? हेलो, यस सर. मैंने जो ट्रांसफॉर्मेशन बोला था वो यूज किया तुमने, एक्स इक्वल टू वाई प्लस पाई। हेलो, यस सर. जो मैंने तुम्हें यूज करने को बोला था उसी को यूज किया ना, जो ट्रांसफॉर्मेशन। सीरीज का तो फॉर्मूला डाल के करते. अरे सीरीज का नहीं, इसमें इंटरवल 0 से 2 पाई की नहीं है ना, इसमें माइनस पाई से पाई के लिए आपको फॉर्मूला पता है, 0 से 2 पाई के लिए थोड़ी आपको फॉर्मूला पता है। समझे आप मेरी बात? यस सर. इस पे मैं आपको बोला ना कि इसको पहले निकालो माइनस पाई से पाई, और उसके बाद क्या करना है, जो फूरियर का फॉर्मूला है वो 0 to 2 पाई के लिए नहीं है, वो माइनस पाई टू पाई के लिए है। समझे मेरी बात? यस सर. तो उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद आपको फिर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना होगा। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन? कि आप x को लिख लो y प्लस पाई, तो x को जैसे ही y प्लस पाई ले लोगे तो उसका y का रेंज आ जाएगा माइनस पाई से पाई। समझे आप? चलो अच्छे से देखना, इसको माइनस पाई से पाई के लिए करना, उसके बाद उसको फिर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इसके लिए निकाल देना। चलो फाइनली इसका प्रॉब्लम क्या आया था, ये जो मैंने प्रॉब्लम दिया था इसका किया, फाइंड द फूरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन। इसका आंसर आया? यस सर. व्हाट इज द आंसर? मैच हुआ? A0 है k by 2. हाँ, और बाकी 2k by 5 cos pi x by 2. अच्छा, जो उसके लिए मतलब यस सर. जीरो जीरो के लिए तो वैनिश हो जाएगा, जीरो मतलब इवन के लिए तो रहेगा नहीं, सिर्फ ऑड के लिए टर्म रहेगा, यस सर. है ना? तो ये सीरीज आया। ये
Yes, sir. Okay. चलो इस प्रॉब्लम को करो. यू टी इक्वल टू जीरो इफ माइनस एल लेस देन टी लेस देन जीरो एंड दिस इज ई साइन ओमेगा टी इफ जीरो लेस देन टी लेस देन एल. तो आपका एल जो है, बाद में आप एल को पुट कर देना पाई बाई ओमेगा. तो आपका यहाँ पे माइनस एल टू एल जनरल फॉर्मूला यूज करो. कर रहे हो आप लोग सॉल्व?
सुमित्रा कर लिया इसको सॉल्व? सर बी एन लास्ट लास्ट में हो रहा है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं डिस्कस कर लो तुम। सर ए जीरो आया, ई बाई पाई, फिर बाई टू करना है। ए जीरो ई बाई पाई, ए एन आया, ई बाई पाई इंटू वन माइनस एन स्क्वायर। टू नहीं आया है, यहाँ पे टू आया है एन में। 2 आएगा। मेरा टू टू कैंसिल हो गया तो। नहीं, माइनस एल टू एल आता है ना, तो P इक्वल टू 2L इज 2 पाई बाई ओमेगा, सो L इक्वल टू पाई बाई ओमेगा। चलो कोई बात नहीं, तुम इसको प्रॉब्लम को अच्छे से देखना कहाँ पे गड़बड़ी हो रहा है, ठीक है।
ये वाला आना चाहिए, ई बाई पाई प्लस ई बाई टू साइन ओमेगा टी माइनस टू ई बाई पाई 1/1 × 3 कॉस टू ओमेगा टी। देखो साइन के लिए सिर्फ जब नॉट इक्वल टू 1 होगा तब आएगा, और कॉस के लिए इवन टर्म्स रहेगा। ठीक है, यस सर। तुमने गड़बड़ी कहाँ पे कर दिया? नहीं, टू टू कैंसिल नहीं, देखो ये एक्चुअली सुमित्रा तुम्हारा नेट का हालत बहुत खराब है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। नथिंग इज ऑडिबल, ओनली इट इज क्रैक्ड वॉइस। Just give me 1 minute. You just check when how it is coming. I've just kept the solution. I am just connecting the. I There is zero charge in my laptop, so I need to connect it with. Sumitra, nothing is audible from your side. It is just cracked voice. Okay. I have already uploaded the book by Erwin Krejcik, and follow that book for further. Just up to this, I think in syllabus there is nothing more in the syllabus. Only Fourier expansion, and then expansion and expanding it in terms of sine and cosine functions and all. There is nothing more. Okay. Sumitra, thank you for joining throughout the classes. Thank you, sir. Tirthankar, thank you for joining today. Okay. Thank you, sir. Okay, and keep contact with me in the email. Okay. Yes, sir. Okay, and if you have any doubt, you just mail me. Okay. Yes, sir. Okay, let's stop today's session then. Bye, see you. Thank night, you, sir. sir. Thank you.